Hello everyone, this is Venkatesh Chaturvedi, a verified educator on Unacademy. मैं पिछले 4 साल से Unacademy में पढ़ा रहा हूँ एंड ये है आपका अगला एपिसोड ऑफ द सीरीज ऑफ अनबायस्ड। इस अनबायस्ड सीरीज के अंदर डिफरेंट जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एंड इट विल बी अप टू यू टू डिसाइड विच पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव इज करेक्ट एंड विच इज नॉट। All right. So, with that particular objective in mind, I am coming forward with the next topic of discussion, which is should India boycott Chinese applications and products? So, आजकल बहुत ज्यादा आपका न्यूज में आ रहा है दैट इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को, इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए चाइनीज एप्लीकेशंस को, राइट? So let us look at why India should boycott them and subsequently we'll look at the alternative perspective that why India should not boycott Chinese products, right? So the first question is why should we boycott Chinese products, right? Okay, so इसका पहला मुद्दा ये है that there have been recent skirmishes, there have been recent face-off that Indian and the Chinese army have been indulging into at the border areas. आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि आपका देमचौक में, जैसे कि आपका गलवान वैली में, नियर पोंगोंगसो लेक, राइट, एज वेल एज इन सिक्किम का आपका एक पास है नाकुला पास. So in these four areas in the last आपका लगभग 10, 15, 20 days there have been a lot of face-offs and there have been a lot of skirmishes जिसमें there have been आपका on and off firing from the Chinese side, right, as well as there have been territorial disputes which have occurred because of the presence of Chinese army on the Indian side. So these are some of the current events in which context there have been a call for boycotting the Chinese products. क्योंकि चाइना आपके बॉर्डर एरियाज में इंडियन टेरिटरी को वायलेट कर रहा है एंड इट इज नॉट अडहेरिंग टू द प्रिंसिपल्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड सिंस 2005, right? Therefore there has been a call that it is high time that Indian should boycott Chinese products. But why so? The thing is that there has also been operation against the Uyghur Muslims by Chinese as well as operation against the Tibet Buddhist people in Chinese. So there is a demography of people who have been oppressed, who do not have fundamental rights, who do not have territorial areas for themselves, such as the Uyghur Muslims as well as the Tibetan Buddhists. So India, if it wants to show solidarity towards the just cause of human right violations which have been meted against the oppression of the Uyghur Muslims as well as the Tibetan Buddhists, there has been a call that India should boycott these Chinese products, which will show a particular sign that India is no longer gonna be the victim of the आपका predatory economic policies of China. So economic policies जो चाइना की हैं जिससे वो बाकी कंट्रीज में जाकर आपका मार्केट को कैप्चर करते हैं, they earn a lot of money and then they invest all of that money into their army, into their militias and which are meeting these human right violations in different places. So for that particular purpose, there has been a call to boycott the Chinese products. Further, India has to be wary of the nexus, the unholy nexus between China and Pakistan. Alright, Pakistan अगर आप हम देखें तो since the inception, since 1947, there have been a lot of problems that India and Pakistan have been facing. Right, one of the latest problems, not latest, but that is quite prominent, is the state-sponsored terrorism across the border which Pakistan is perpetrating. And in the endeavors of Pakistan perpetrating these cuts, our death by 1,000 cuts, which they want to do against India, China has been one of the major supporters of endeavors of Pakistan. So China support करता है पाकिस्तान को internationally, आपको support करता है financially. That is a very unholy nexus for India. अगर हम लोग चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो we are filling in the pockets of Chinese, which is going to be sponsoring the terror activities indirectly through Pakistan. So that is one of the prime reasons why India should boycott the Chinese products. Chinese product को आप अभी खरीदोगे, उसका जो पैसा है वो जाएगा आपके चाइना में, चाइना के जो लोग हैं उसका पैसा देन आपका टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट को जाएगा, गवर्नमेंट का आपका पैसा जाएगा सीधे सीधे
आपके पाकिस्तान में, and then Pakistanis would invest into all these kind of terror activities of state sponsored terrorism across the border. So that is one of the prime reasons of the call to boycott the Chinese products. Further, इस समय अगर आप देखो, there are two more issues which are happening. One is Taiwan, right, which claims itself to be an independent state, right, and then there is Hong Kong. So if the Indian people stop after purchasing the Chinese products, it will also be a symbolic gesture of solidarity in favor of the rights of Taiwanese as well as the right of the Hong Kong people to assert their autonomy, to assert their special status which they have, right. अगर आप recent times में देखोगे, there are a lot of protests which are going on in Hong Kong, right. Even at the World Health Association, Taiwan made an appeal to get a आपका observer status, right. दो उसकी बात नहीं मानी गई, परंतु अगर इंडिया को चाइना को इंटरनेशनली आइसोलेट करना है, इफ इट वांट्स टू counter the rise of China internationally as a neo-imperialist power, so इंडिया को ताइवान के कॉज को और हांगकांग के कॉज को भी सपोर्ट करना पड़ेगा. There are many ways of doing it. One of those could be also reducing the growth of Chinese economically by boycotting these Chinese products. All right. Further, in the recent times, as I told you, there is a very unholy nexus between China and Pakistan, which is also seen by the construction of the Dimer Basha Dam in the Gilgit-Baltistan region. The Gilgit-Baltistan region is आपका legally Indian, but because of the illegal occupation by Pakistan, there have been a lot of development by Pakistan in that area in terms of the recent election announcement as well as the Dimer Basha Dam which they are constructing with help from China. तो जब चाइना आपका इंडियन लीगल लैंड के ऊपर पाकिस्तान से के साथ मिलकर के एक डैम बना सकती है, तो दैट शोज दैट इट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ आवर ओन कंट्री, एंड देयरफॉर वी हैव टू काउंटर चाइना इन ऑल वेज पॉसिबल, एंड वन ऑफ देम वुड बी थ्रू द boycotting of Chinese products, right. So the elections which are announced in Gilgit-Baltistan region, जिसमें पाकिस्तान ने आपका किया है, along with the Dimer Basha Dam, provide enough reasons for boycotting the Chinese support that the Pakistan is getting in all of its endeavors, right. In fact, जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका CPEC CPEC यानी कि चाइना Pakistan economic corridor is also proposed to pass through the Gilgit-Baltistan region all the way to the Gwadar port. So that also shows the Chinese disregard for Indian sovereignty and Indian interests, right. So this is the next reason why India should be boycotting these Chinese products. Further, one of the things which China indulges into is dumping of its cheap products into the foreign market. Especially India में अगर आप देखो, बहुत सारे आपके चाइनीज आपके सब ऑप्टिमल भी होते हैं, लो क्वालिटी भी होते हैं, परंतु बड़े सस्ते होते हैं. व्हाट दैट डज इट, इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज मिलता है. द प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है यहाँ के, उन लोगों को यहाँ पे बेचने में दिक्कत आती है, बिकॉज दे फेस अ वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द लो रेट आपके प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग फ्रॉम चाइना. So the dumping tactics by China is another reason for boycotting their products, so that हमारे जो इस समय ऑब्जेक्टिव है ऑफ आत्मनिर्भरता, राइट, स्पेशली ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस, इज फुलफिल्ड. अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो खुद के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर बेनिफिटेड, उनके पॉकेट्स में पैसा ज्यादा जाए एंड पैसा इंडिया से बाहर ना जाए स्पेशली टू चाइना, देन वी मस्ट बाइकआउट द चाइनीज प्रोडक्ट्स, राइट. इन एडिशन टू दैट, the thing about the Chinese applications such as Zoom, such as Zender and so on and so forth, बहुत सारे ऐसे applications हैं, Chinese आपके applications हैं which basically have had concerns about the privacy as well as data security. तो बहुत जगह हमने देखा है कि the accounts have been hacked. There are allegations that the Zoom app has become a source for collecting data, right, of the people, and which could be misused by the Chinese for all kind of आपके unnecessary activities, and therefore privacy concerns and the data security concerns of the Chinese applications is one of the prime reasons why in the recent times we have also seen that there is a call for uninstalling the Chinese applications from your mobile phones, right. So therefore there have been these reasons because of which the products
as well as the applications have been asked to be boycotted in India, which are originating from China, right? So these were the reasons for this particular stand. Now let us look at the other stand. Why is it not a good idea to boycott Chinese product? क्यों नहीं है आपका ये अच्छा आइडिया कि हम लोग बाइकआउट करें ऐसे ही आपके चाइनीज प्रोडक्ट्स को, राइट? वन एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दैट चाइनीज प्रोडक्ट्स आर एवरीवेयर, राइट? आपकी जो भी डेली की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, चाहे आपकी स्टेशनरी हो, चाहे आपकी दिवाली की लाइट्स हो, चाहे आपके फ्लैग्स हो, चाहे आपके छोटे मोटे होल्डर्स हो, कप्स हो, मग्स हो, these are there are so many things which are everywhere, so it will be very 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 difficult to actually fend them off. आपको पता ही कैसे चलेगा कि कोई चीज चाइना से आ रही है कि नहीं आ रही है, unless and until you take an concerted effort of finding it out from the manufacturer या from the trader कि कहाँ से आया है वगैरह. So it becomes very tedious in effect to fend yourself away from the Chinese products when because of the globalized world the Chinese products are everywhere. So the first reason why this may not be a good idea is that Chinese products सब जगह हैं, इतने सारे हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में इतने ज्यादा एनग्रोस हो चुके हैं that at times you may not even have alternatives available. क्या पता आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ऑल्टरनेटिव अगर नहीं है तो आप कैसे करोगे if it has become so important in your daily life, right? The first reason is that Chinese products are everywhere. The second reason is what product would we classify as Chinese? Alright, one thing is for sure, अगर कोई चीज चाइना से इंपोर्ट डायरेक्टली आ रही है then definitely that particular product would be आपका चाइनीज, so to say, right? But the thing is that बहुत सारे जब इस समय आपके ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, right? When there are so many companies जिसमें चाइनीज स्टेक हो सकता है, so would you boycott them as well? कितने स्टेक को आप मानोगे चाइनीज, कितने स्टेक को नहीं मानोगे चाइनीज? इस 10% stake of Chinese company in a company enough to call it a Chinese company? Is 90% enough? If is 1% enough? So the question is क्या classify करोगे? Which product, which company would you classify as Chinese? Is just 100% ownership enough for Chinese, or are you ready for 50% also, or even if it is 1%? So imagine a situation that an Indian person has set up with all their endeavors a company in India and has got a आपका investor from China who owns maybe 5% of the company. Would that 5% be enough for you to disregard the 95% of the stake that an Indian has in that particular company, and you start boycotting that company, in effect creating a problem for an Indian person who has a 95% stake? It's just a thing to ponder about. The next thing, we import 65% of the APIs from China. What is API? It is your आपका active pharmaceutical ingredient, the raw material used to make your drugs. आपके जितने भी drugs हैं, most of them would have some raw material coming from China. अब क्या आप ये भी कहने लग जाओगे कि भैया हम कोई दवाई ही नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत सारे जो APIs हैं, 65% of the country's APIs are coming from China? Again, a particular question to ponder about, right? Further, what is the impact on Indian traders? अब देखिए, आपका कोई चाइनीज प्रोडक्ट है अगर आता है इंडिया में, तो कोई चाइनीज आदमी तो यहाँ पे उसको जनरली नहीं बेच रहा होता है. इट्स एन इंडियन पर्सन हु इज सेलिंग इट, इट्स एन इंडियन रिटेल शॉप, इट्स एन इंडियन सप्लाई चेन. क्या just because that product has come from China, would you disregard the fact that अगर आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हो, क्या पता जो ट्रेडर है, जो इंपोर्टर है, जो यहाँ पे सेलर है, जो रिटेलर है, उसका आपका आप उसका पूरा धंधा बैठा दे रहे हो, right? So you have to figure out also the reason that many of these traders already have had procured these products in the past, and now if you start to boycott all of it all of it suddenly, तो कोरोना टाइम्स में उनकी तो भैया जेब और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी. when they were relying on the fact that चलो हमारे पास कुछ स्टॉक है, चलो इसको बेचते हैं, अब कोई अगर खरीदने वाला ही नहीं है, ये बेचारे क्या करेंगे जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, who are having these Chinese products, right? The next very important concept is a golden arches theory. ये एक आपकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है ऑफ आइडियलिज्म विद इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्योरी. उस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस को भी. ऑलराइट, द गोल्डन आर्चेस थ्योरी स्टेट्स दैट टू कंट्रीज व्हिच हैव मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी will never go to war.
इन इफेक्ट इट्स ट्राई टू से दैट अगर दो कंट्रीज आपस में बहुत अच्छे से इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हैं, इफ दे आर इंटीग्रेटेड इकोनॉमिकली, बहुत अच्छा खासा ट्रेड होता है, दे हैव सो मच ऑफ स्टेक इन ईच अदर्स डेवलपमेंट दैट वो कभी भी आपके ऑल ऑल आउट वॉर में नहीं जाएंगे. सो एज पर दिस थ्योरी दो कंट्रीज को अपने ट्रेड रिलेशंस को इंक्रीज करना चाहिए रादर देन डिक्रीजिंग, सो दैट दे हैव सो मच ऑफ इंटरडिपेंडेंस कि उनके आपसी जो मतभेद है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से बाकी रिजॉल्व होते चले जाएंगे. So this is a very interesting theory of आपके Frieden who has given the idea that golden arches theory should apply in these आपके questions, especially when we talk about say boycotting Chinese products. तो अगर इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, दिस थ्योरी क्वेश्चंस द फैक्ट दैट क्या पता चाइना को फिर इंडिया के खिलाफ वॉर करने की जो इस समय एक तरह से बड़ा ही थ्रेशोल्ड होता है, राइट. सोचना पड़ता है 10 बार, यार अरे हमारे तो इन्वेस्टर्स हैं वहां पे बहुत सारे, हमारी तो बहुत सारा पैसा वहां लगा हुआ है, वो जो पर्टिकुलर एक डेटरेंस है क्या पता वो खत्म हो जाए, राइट. तो therefore the democratic peace theory kind of opposes the idea of boycotting Chinese products just like that. Just one point of contention to this theory I'd like to put before we end our session is that this theory is not universally applicable, because there are critics to this theory which basically state that अगर दोनों कंट्रीज सेंसिबल है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक नहीं है, देन आपका ये जो थ्योरी है वो बहुत बार अप्लाई करता है, क्योंकि पीपल का स्टेक है कहीं पर अगर, तो पीपल देमसेल्फ विल नॉट अलाउ दी लीडर्स टू गो टू वॉर. परंतु चाइना, क्या इज इट अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री? आर इज द चाइनीज पीपल आर चाइनीज पीपल्स एस्पिरेशंस एंड देयर आपके जो बातें हैं वो उनकी लीडरशिप मानती है? इज इट डेमोक्रेटिक कंट्री इनफ to curtail them going to war even if they have economic interest? That is a question to be answered, right? So is the golden arches theory effective between India and China is a question to be answered. All these questions including the question that India को क्या आपको चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए, चाइनीज एप्लीकेशंस को बाइकआउट करना चाहिए, इज समथिंग विच इज अप टू यू टू डिसाइड. तो अब ये सब को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. कमेंट से मुझे बताइए, क्या आप सपोर्ट करते हैं इंडिया को चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने के लिए, और डू यू हैव रिजर्वेशंस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मूव? Please comment in the comment section below. Let's have a very healthy academic debate. Let's not have a polarized debate in the comment section. I hope you guys enjoyed the session and understood the academic side of this particular question, right? Please suggest more such topics, and thank you so much. We'll see you in the next episode number 4 of the Unbiased series. Do not forget to like, do not forget to subscribe, as well as share this particular video. Thank you so much.